In the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. My name is Mrs. Sania Latif, SS Chemistry at Divisional Public School and College, Sahiwal. Today's our topic is of Chapter 9, Aromatic Hydrocarbons, Stability of Benzene and Resonance. Objectives of today's lessons are my students will be able to understand the extraordinary stability of benzene and resonating behavior of pi electrons in benzene ring. Dear students, benzene is an extraordinary stable molecule. Why benzene is an extraordinary stable molecule as compared to an ordinary 1,3,5 hexatriene molecule? बेंजीन की एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी की वजह जो है एक्सटेंसिव delocalization of electronic cloud. Dear students, in benzene, look at the electronic cloud is highly delocalized. जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक जगह लोकलाइज्ड नहीं है, किसी एक जगह पर स्टेबल नहीं है, बल्कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस पूरे रिंग के अंदर इस तरह से रिवॉल्व करते रहते हैं, हर वक्त घूमते रहते हैं. तो इस डीलोकलाइजेशन की वजह से बेंजीन रिंग हाईली स्टेबल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल है. Stability of benzene can be measured by comparing it with hypothetical compound 1,3,5 cyclohexadiene. जो 1,3,5 cyclohexadiene है, apparently वो भी बिल्कुल बेंजीन जैसा है, उसका स्ट्रक्चर भी साइक्लिक हेक्सागोनल है, उसके अंदर भी 3 पाई बॉन्ड मौजूद हैं जैसा कि बेंजीन रिंग के अंदर होते हैं. हम बेंजीन को 1,3,5 cyclohexadiene के साथ कंपेयर करेंगे और हम बताएंगे कि बेंजीन ऑर्डिनरी साइक्लिक ट्राइन नहीं है, बल्कि इसमें कुछ और है जो कि इसको बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाता है. जी बेटा, cyclohexene is a 6-membered ring containing one double bond, can be easily hydrogenated to give cyclohexane. Look at this is a cyclohexene containing a single double bond. When this cyclohexene will get hydrogenated with a single molecule of hydrogen in the presence of platinum, it will be converted into cyclohexane. And the energy released during this process will be minus 119 kilojoule per mole. इसका मतलब है कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करके एक पाई बॉन्ड को ख़त्म करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है वो है minus 119 kilojoule per mole. Dear students, if we have another molecule that is a 1,3 cyclohexadiene, अब ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है, ये भी एक साइक्लिक जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो इसे हम कहेंगे इट्स अ 1,3 cyclohexadiene. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस साइक्लोहेक्साडाइईन के इन दोनों पाई बॉन्ड्स की हाइड्रोजिनेशन कर दें
तो हमें इसके अंदर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड करना होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेन। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करने के लिए एक पाई बॉन्ड के अंदर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो है -119.5 किलो जूल्स पर मोल। तो 2 पाई बॉन्ड्स की हाइड्रोजनेशन के लिए 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की एडिशन करना होगी। तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की 2 पाई बॉन्ड्स में एडिशन के साथ जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी twice of -119.5 kilojoule per mole. So 2 into -119.5 will be equals to -239 kilojoule per mole. Students, we would expect that hydrogenation of 1,3-cyclohexadiene would liberate roughly twice as much heat equal to about 239 kilojoule per mole. But the experimental result is -231.5 kilojoule per mole. The result is quite close but not exactly same. Difference is there. जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो है -231.5 बट हाइपोथेटिकल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू शुड बी 239 किलो जूल पर मोल। ये जो इतना डिफरेंस है एनर्जी में ये कहाँ गया जी? ये बेटा जो बॉन्ड्स हैं ये ऑल्टरनेट बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो डबल सिंगल डबल इन बॉन्ड इस तरह की बॉन्डिंग को हम कॉन्जुगेट बॉन्डिंग कहते हैं। ये कॉन्जुगेट बॉन्डिंग जो है ये डीलोकलाइज्ड हो जाती है। यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो रेजोनेंस शुरू कर देते हैं। रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन की वजह से मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी में इजाफा हो जाता है। तो ये 1,3-cyclohexadiene containing this conjugate bonding is a little more stable as the expected value 239 kilojoule per mole. Dear students, here is another molecule that is a cyclohexane containing 3 pi bonds and now it is 1,3,5-cyclohexatriene. अगर हम इस ट्राइइन के इन तीनों पाई बॉन्ड्स की हाइड्रोजनेशन करें by the addition of 3 hydrogen molecules in the presence of platinum, it will be converted into cyclohexane. हमें पता है एक पाई बॉन्ड में एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एडिशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो है -119.5 किलो जूल पर मोल। अब इस ट्राइइन के पास बॉन्ड्स हैं 3, 1, 2, 3। तो हमें इसके अंदर ऐड करना पड़ेंगे 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो फिर जो एनर्जी है वो भी थ्राइस हो जाएगी। द एनर्जी रिलीज्ड विल बी 3 into -119.5 that will be equals to -358.5 kilojoules per mole. So for the hydrogenation of this 1,3,5-cyclohexatriene, the energy should be released -358.5 kilojoule per mole. But
When this 135 cyclohexatriene is hydrogenated, the energy released is minus 208 kilojoule per mole. There is a big difference. The expected value is minus 358.5 kilojoule, but the actual heat released is minus 208 kilojoule per mole. The difference in these two expected and actual values is 150.5 kilojoule per mole. There is a point to think. What a difference! But why? ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ गया एक्सपेक्टेड और एक्चुअल वैल्यूज में? हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे. Dear students, if benzene is a simple 135 cyclohexatriene, we would predict that benzene would liberate approximately minus 358.5 kilojoule per mole. But the result is surprisingly different. The reaction is exothermic, but only by minus 208 kilojoule per mole. Now we will discuss the reason for this decrease in energy. Dear students, for hydrogenation of one pi bond, energy released is minus 119.5. For hydrogenation of two pi bonds, the energy released is minus 231.5 kilojoule per mole. For 3, the expected value is minus 358.5 kilojoule per mole. But in case of benzene, the energy is minus 208 kilojoule per mole. The energy is minus 208 kilojoule per mole. The difference is of 150.5 kilojoule per mole. Dear students, indeed benzene is more stable than a hypothetical 135 cyclohexatriene by 150.5 kilojoule per mole. The difference between amounts of heat actually released and calculated is called resonance energy. Benzene shows resonance which make it more stable than others. In benzene, electrons are delocalized, making it a very stable molecule. बेंजीन के अंदर जो 3 पाई बॉन्ड्स हैं, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हैं, वो कॉन्जुगेटेड हैं. तो कॉन्जुगेटेड और ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स जो हैं वो रेजोनेंस शो करते हैं, डीलोकलाइजेशन शो करते हैं. तो डीलोकलाइजेशन और रेजोनेंस की वजह से जो बेंजीन है वो 150.5 किलोजूल पर मोल मोर स्टेबल है as compared to an ordinary hypothetical 135 cyclohexatriene. Look at this is delocalization of its pi electronic cloud. Dear students, benzene के अंदर हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और इसके अंदर जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये delocalized हैं. They are revolving among all these half filled orbitals. एक इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह पर कंसिस्टेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है. ये इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ है, कभी इस ऑर्बिटल में है, कभी इस ऑर्बिटल में है, कभी इसमें है. इस तरह से ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स किसी एक जगह स्टेबल नहीं है, किसी एक जगह मौजूद नहीं है. दे आर रिवॉल्विंग ऑल द टाइम, दे आर
delocalized all the time. That's why we can show benzene as it. This is benzene ring, and these two are electronic clouds, pi bond electronic clouds. They are making a sheath above and below this hexagonal structure. Dear students, now what is resonance? We said that 150.5 kilojoule is the resonance energy of benzene, which make it more stable than a hypothetical 135 cyclohexadiene. What is resonance now? Dear students, the possibility of different pairing schemes of valence electrons of atoms or different possible structures of a molecule is called resonance or resonance structures. अगर किसी मॉलिक्यूल के पास एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्कीम्स की पॉसिबिलिटीज में इजाफा हो जाता है. तो जितनी ज्यादा जो है वो possibilities of different pairing schemes of valence electrons of atoms और molecules available होंगी, उतने ज़्यादा उनके resonance structures होंगे, तो उतनी ज़्यादा जो है वो उस molecule की stability होगी. अब हम बेंजीन के अंदर resonance देख लेते हैं और उसके resonating structures देख लेते हैं. Look at these are two resonance structures of benzene. ये हमारे पास बेंजीन है जिसके अंदर 3 pi bonds हैं. These 3 pi bonds are not localized, are not permanent, are not fixed on these 3 positions. ये हर वक्त इस रिंग के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं. एक टाइम पे पाई बॉन्ड यहाँ है तो at the very next moment this pi bond will be at some other position, at some next position. तो एक लम्हे पे अगर पाई बॉन्ड्स की पोजीशंस ये हैं तो अगले लम्हे पे जो है इनकी पोजीशंस चेंज हो जाएंगी, ये बॉन्डिंग्स शिफ्ट हो जाएंगी और इस तरह से बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर ये तीनों पाई बॉन्ड जो है वो मूव करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं. एक तो ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है, एक ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है, एक ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है जिसमें एक जो थर्ड बॉन्ड है वो कंपैरेटिवली लार्जर है, और एक ये पेयरिंग स्कीम है कि ये जो लार्जर बॉन्ड है वो इन 2 कार्बन एटम्स के बीच में हो, और एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर ये है कि ये जो लार्जर बॉन्ड है वो इन 2 कार्बन एटम्स के बीच में हो. तो ये पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं फॉर बेंजीन रिंग. These 2 structures are presented by Kekule, and these 3 structures are represented by Divar. Dear students, in Divar structures, the larger bonds are energetically unfavorable. Hence, the Divar structures have minor contribution towards the actual structure of benzene. Look at these larger bonds are energetically unfavorable. These are unstable molecules. तो इस मॉलिक्यूल में इस अनस्टेबल और लार्जर बॉन्ड्स की प्रेजेंस की वजह से इन मॉलिक्यूल्स के जो स्टेबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो गई है, स्टेबिलिटी भी कम हो गई है. तो जितनी जिस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम होती है उतना उस पॉसिबल स्ट्रक्चर का एक्चुअल स्ट्रक्चर के तरफ कंट्रीब्यूशन जो है वो भी कम हो जाता है. 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स में जो कि केक्यूल ने प्रेजेंट किए, केक्यूल ने डिजाइन किए, उसमें तीनों पाई बॉन्ड्स की लेंथ्स जो है वो सेम है,
कोई भी एक सिंगल पाई बॉन्ड जो है वो किसी दूसरे पाई बॉन्ड से लार्जर या शॉर्टर नहीं है। तो ये जो दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, इनके पाई बॉन्ड्स की जो लेंथ है वो सेम होने की वजह से इन दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द थ्री स्ट्रक्चर्स प्रेजेंटेड बाय डिवार containing a larger bond. So, due to their stability, the contribution of these two structures towards the actual structure of benzene is increased. Cacule structures have larger contribution, so benzene can be represented by any of these two structures. हालांकि रेजोनेटिंग पॉसिबल स्ट्रक्चर्स तो 5 हैं, लेकिन ये दो स्ट्रक्चर्स ज्यादा सुटेबल हैं, ज्यादा फिजिबल हैं, ज्यादा स्टेबल हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन भी एक्चुअल स्ट्रक्चर की तरफ ज्यादा है। तो हम एक्चुअल स्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय वन ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स। हम बेंजीन को इस तरह से भी शो कर सकते हैं, हम बेंजीन को इस पाई बॉन्ड्स की सेटिंग के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The three alternate single or double bonds are conjugate bonds and these structures are resonating structures. Since benzene is a resonance hybrid, so an extraordinary stable molecule. Benzene एक resonance hybrid है of 5 possible structures, 2 represented by Cacule and 3 represented by Divar. So it's a resonance hybrid and it's a quite stable or an extraordinary stable molecule. Dear students, look at benzene can be represented by the 3 conjugate or delocalized pi bonds. As these pi bonds are not stable, they are not fixed at these positions. एक वक्त में ये पाई बॉन्ड इन दो कार्बन्स के बीच में है, तो अगले वक्त में ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तीनों पाई बॉन्ड्स जो हैं वो हर वक्त मोशन में हैं, हर वक्त रिवॉल्व कर रहे हैं, जो वो अपनी पोजीशंस चेंज कर रहे हैं। तो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है कि हम इन पाई बॉन्ड्स को इस तरह से बॉन्ड्स की फॉर्म में शो करने की बजाय हम बेंजीन के अंदर एक रिंग बना दें। ये रिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इन पाई बॉन्ड्स की डिलोकलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो द सर्कल इन द बेंजीन रिंग exhibits the extensive delocalization of the 3 pi bonds, and this structure of benzene is quite suitable. Look at this is the expanded structure of benzene containing 6 carbon atoms and 6 hydrogen atoms, and these are the 3 pi bonds of the benzene ring. Dear students, benzene has cyclic structure. How can we prove this, that benzene is a cyclic molecule? There is a clue for us that benzene is cyclic in nature. Look at this is a benzene molecule. When this molecule undergoes substitution reaction, a mono-substituted product is obtained. इसका मतलब है कि इस बेंजीन रिंग के 6 कार्बन एटम्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, और इनकी जो है वो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एन इनकमिंग रेडिकल जो है वो सेम है. सो इन सब्स्टिट्यूशन benzene gives only mono-substituted product.
Dear students, when a monosubstituted product undergoes another substitution, the second group will give ortho, meta or para substitutions depending upon the nature of already existing this substitution. तो इसका मतलब है कि जो आने वाला ग्रुप है उसके लिए सारी पोजीशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं और वो किसी भी जगह पर ऑर्थो, मेटा या पैरा पर सब्स्टिट्यूशन शो कर सकता है. तो ये substitution reaction in case of a single substitution it show monosubstituted product, and in case of double substitution it shows three types of products. Prove that benzene is cyclic in nature. All the 6 carbons are same and identical in their nature. These points confirm the regular hexagonal cyclic structure for benzene in which all the carbon atoms are occupying identical positions in the molecule. मॉलिक्यूल के अंदर सारे कार्बन एटम्स सेम हैं, उनकी पोजीशंस आइडेंटिकल हैं. इसी वजह से मोनो सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन हमेशा वन प्रोडक्ट देता है. ऑल द कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर सेम बट डिफरेंट फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइन्स. बेंजीन की जो कार्बन बॉन्डिंग है वो ना तो अल्कीन से मिलती है, ना अल्कीन से मिलती है और ना ही अल्काइन से मिलती है. इन केस ऑफ अल्केन the carbon single bond length is 1.54 angstroms. In alkenes, the carbon double bond is 1.34 angstroms. In case of alkynes, the carbon triple bond length is 1.20 angstroms. But in benzene ring, the carbon bond length is 1.397 angstroms. This is greater than single carbon bond length in case of alkanes, and this bond length is shorter than a double bond present in alkene. इसका मतलब ये है कि बेंजीन का जो कार्बन बॉन्ड है वो अल्केन के सिंगल बॉन्ड से छोटा और अल्कीन्स के डबल बॉन्ड से बड़ा है. तो बेंजीन का जो सीसी बॉन्ड है वो इन बिटवीन है सिंगल एंड डबल बॉन्ड. इट इज इन बिटवीन एन ऑर्डिनरी कार्बन सिंगल and a carbon double bond. Dear students, then we have learned in this lesson that benzene is more stable by 150.5 kilojoules per mole than an ordinary 135 cyclohexadiene. Reason क्या थी? 135 cyclohexadiene also containing 3 pi bonds, but in case of benzene the 3 pi bonds are extensively delocalized. They are not fixed on their positions. Extraordinary stability of benzene is due to resonance. Resonance means delocalization of pi electrons, and stability increases with increase in number of its resonance structures. जितने भी किसी मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे उसकी पॉसिबल पेयरिंग स्कीम्स ज्यादा होंगी, उतना वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा. एक मॉलिक्यूल के अगर 2 पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं
और एक दूसरे मॉलिक्यूल के 5 पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, तो 5 पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू आर molecule having only 2 possible resonance structures. The resonating single and double bond in benzene can be better represented by a circle inside the ring. Different positions पे 3 pi bonds को show करने से उसकी revolving, उसकी resonance, delocalization इतने बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट नहीं होती जैसा कि एक सर्कल बेंजीन रिंग के अंदर एक सर्कल लगा देने से उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डीलोकलाइजेशन ज्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट होती है. डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन इज हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल. जैसा कि हम पूरे लेसन में ये सीख चुके हैं कि बेंजीन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल है और इसकी स्टेबिलिटी की वजह क्या है? दिस स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द एक्सटेंसिव delocalization of the electron cloud. Look at this delocalization. The 6 electrons of 3 pi bonds are all the time revolving cyclic structure of benzene. Look at this electronic cloud above and below this cyclic hexagon. Dear students, today's assignment for my dear students is explain the stability of benzene in comparison with heat of hydrogenation of an ordinary 1,3,5 cyclohexadiene. आपने कंपेयर करना है 1,3,5 cyclohexadiene की heats of hydrogenation को as compared to benzene. Dear students, you have to draw possible resonating structures of benzene. This is all from my side. Thank you and Allah Hafiz.